The one that's fascinating is coming straight ahead of you. Just wait for 3, 2 and 1. Namaskaram everyone, welcome back to my channel. It's like 11 AM in the morning now and we are heading towards Matheran. Matheran hill station जो है, so it's around like 30 to 35 kilometers from here. और हम actually थोड़ा जल्दी निकलने वाले थे, like around 8, but you know, ये बारिश के वजह से it has been delayed a lot and we hope that we get a very good captures over there. We get a like very good view over there and we have 3 other people with us. That is Oliver Gerald, Rahul Bhatt and Anto. So we're not dealing it much. We'll just leave from here as soon as possible and thoda like jaldi jaake we are planning to come around like till evening. So let's see what all views we see over there and I hope this goes very well. So let's directly go to our ride. So it's around 11:45, 12 in the morning now. We have almost crossed Badlapur. Just petrol भर के just निकल रहे थे. I just hope it doesn't rain because weather forecast अगर देखेंगे तो कल से तो बहुत ही ज़्यादा बारिश चालू है. We didn't expect this much rain today. अभी यहाँ पे तो पूरा weather clear ही बता रहा है जब हमने last check किया. But I'm not sure about the weather in Matheran currently. And I hope it doesn't rain much. I don't want that slash and all over again. So it's not pretty much far from my house. It's just around 27 to 28 kilometers. It would just take around like 30 to 40 minutes more to reach there. With slight amount of traffic currently and not much rain. We are probably not going to take any snack break because we have already had our breakfast. All of us have had our breakfast, so I don't think so there would be any requirement to just take. Nevertheless, if someone feels to have something, so शायद किधर रुक के छोटा मोटा चटपटा लेके then we just push off. Just 5 minutes ago it was raining a lot. Now suddenly the sun has come up. This is the versatility of the climate of India and I love this thing a lot. So यहाँ से ये गेट से स्टार्ट होता है घाट सेक्शन. The ghats here are not too risky until we reach a particular place. वहाँ पे there's like a sudden turn where I had my first fall buying this new bike. So one good thing that is that we have locks over here. जिसकी वजह से अगर कोई like गिर भी जाता है, so he won't like directly fall down. Almost the top and just 2 more minutes. Shit fog. बहुत लोग हैं यहाँ पे. We need to find a place to park my vehicle now. Just parked our vehicle. अब चाहते let's explore Matheran now. घोड़ा वो जो गधे को घोड़ा बनाया. अरे वाह. भुट्टा, हाँ इधर से भुट्टा जल रहा है. बहुत लोग का धुआं था, धुआं नहीं था. ये घोड़ा को देख, ये देख, ये घोड़ा लग रहा है तेरे को? ये घोड़ा मुझे घोड़ा लग रहा है. नीवा गधा कितना थोड़ी हाइट है. नीवा लोग सच में नहीं है रे. घोड़ा नहीं है, पूरा घोड़ा नहीं है वो गधा. हाँ ये क्लियर घोड़ा दिख रहा है यार. ये क्लियर घोड़ा दिख रहा है. गधे को इतना हाइट नहीं रहेगा. गधे का अगर घोड़ा बना भी दिया इतना हाइट नहीं रहेगा यार. और नीचे से इनफैक्ट अपने को एक टिकट लेना पड़ता है टू लाइक ऊपर आने के लिए. आगे बिल्कुल लाइक देयर इज नो विजन राइट. पूरा फॉग फॉग फॉग. ग्लैड वी डिडंट मिस दिस. इट्स टू फॉगी आउट हियर नाउ. और यहाँ पे बहुत जोर से बारिश गिर रहा है बट जस्ट बिकॉज ऊपर पूरा ट्रीज है उसकी वजह से बारिश लाइक थोड़ा कवर होके नीचे तक नहीं पहुँच रहा है. अदर दैन दैट दिस प्लेस लुक्स सो ऑसम. मैं लाइक बहुत बार माथेरान आया हूँ बट आई हैव नेवर एक्सप्लोर्ड दिस इंटीरियर पार्ट ऑफ Matheran, to be honest.
But I didn't know कि मेरे घर से बस 30 to 40 kilometers दूर इतना एक beautiful location था, and I've ever missed it. इससे fast तो अपना bike जाएगा ना? This is the train that travels towards Nerul to Matheran. It's like a very short train which connects like Nerul to Matheran. Some short train and this is like full occupied with a lot of people and looks so awesome. Sorry guys, we missed an important update. हमको actually प्रणव ने surprise देने हैं and I didn't expect कि इतना beautiful surprise देगा. So I just want to show that how Pranav looks. He looks so fabulous today. Hi Pranav. Hi, how are you? Hey, don't run away. Hello. अरे आजा भाई, अपन जाते चल. Just kidding bro, वो नहीं आ पाया. किसी हिल स्टेशन आके बिना मैगी खा के जाना it's not like worth it. So we have just stopped here around for a Maggie break and I guess ये कब भी मैं खाए. और ये जो इंसान ये मेरा मैगी चुराने की कोशिश की ब्लॉग के बीच में मेरा मैगी चुराने की कोशिश किया. बस एक मैगी ब्रेक तो होने के बाद we have headed towards one of the points in Matheran and I can like really see this view. It looks so beautiful out here. Like the one that I shown you backwards, that's not actually fascinating. The one that's fascinating is coming straight ahead of you. Just wait for 3, 2 and 1 and it goes. We have just reached the parking lot now. अभी यहाँ से निकल रहे and it was a beautiful experience all over. ऊपर का जो view था वो fog, वो perfect climate. Only the rain was an issue but चलेगा क्या, no worries. बहुत अच्छा लगा ऊपर जाके and we are heading home now. अभी ये parking lot है, बस गाड़ी निकाल के we have to get down once again. So let's go. It's 4:30 in the evening now. And I'm sure this doesn't make it feel like it's 4:30. It's too misty out here. Finally we're out of Matheran now and obviously we all are tired है ना. एक्चुअली बहुत एग्जॉस्ट हो गया ना, ड्रेन आउट हो गया रे मैं अभी. जस्ट पीछे एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और वो जो कार का जो कांच है पूरा नीचे सब बिखरा हुआ पड़ा था. इट फील्स सो डिसअपॉइंटिंग मैन कि यार लाइक कोई निकलता है अपने घर से एंड देन वो घर नहीं पहुंच पाता लाइक इन द राइट पोजीशन, वो उसका एक्सीडेंट होता है. सो इट फील्स सो बैड नॉट लाइक इवन फॉर द फैमिली. आज तो इट्स लाइक ऑलवेज रिकमेंडेबल कि यार ड्राइव सेफली. हमको कुछ होगा दैट लाइक हम ज़्यादा इफेक्ट नहीं होंगे जितना ज़्यादा हमारा पेरेंट्स इफेक्ट होंगे बिकॉज दे आर द वंस हु आर वेटिंग फॉर अस कि हम किसी ट्रिप या फिर किधर जाके हम आ रहे घर पे एंड देन दे डोंट वांट अस टू सी इन दैट पोजीशन या फिर हॉस्पिटल में एडमिट होते हुए वो अपने को नहीं देखना चाहते. तो जो भी ऐसा रैश ड्राइविंग या फिर अनवांटेड स्पीडिंग करता है इट्स ऑलवेज रिकमेंडेबल कि यार थोड़ा आहिस्ते से चलाओ. यहाँ से वहाँ पहुँचना ही है, लाइक चाहे तुम 80 के स्पीड में जाओ या फिर 30 के स्पीड में जाओ, पहुँच तो तुम जाओगे. बट नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू कि 80 की स्पीड में जाके किधर ठोक के मरना है या फिर 30 की स्पीड में सेफली जाके घर पहुंचना है. इट्स ऑल अप टू यू दैट. सो जस्ट राइड सेफली गाइज. वैसे वी आर ऑलमोस्ट क्लोज टू आवर हाउस. कुछ 10-15 मिनट्स में हम पहुंच जाएंगे. सो प्रोबेबली वील एंड आवर व्लॉग हियर. इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल राइड ओवरऑल. सो या So hey guys, we're almost about to reach home and यहाँ से कुछ और like 5 to 10 minutes and then we'll be home. So we are ending the vlog over here and it was a very beautiful ride overall. It was a very beautiful experience exploring Matheran.
हम गए माथेरन इसके पहले, बट इट वॉज नेवर सो ब्यूटीफुल लाइक एज इट वॉज दिस टाइम, बिकॉज हम पहले कभी बारिश के मौसम में नहीं गए. एंड अगर गए तो वी हैव एन एक्सपीरियंस दैट मिस्ट एंड फॉग एंड ऑल दो स्टफ्स. बट today we got to see all those, and I'm very glad that I got an opportunity to capture all these. We all are tired a lot क्योंकि वो बारिश में चलाना, बिकॉज क्लाइमेट वॉज ओवरऑल गुड, बट वो जब वो बारिश का थोड़ा इशू था तो फिर लाइक थोड़ा बारिश ज़्यादा गिर रहा था, जिसके वजह से थोड़ा अनकम्फर्टेबल हुए थे हम लोग बीच में. बट ओवरऑल इट वॉज लाइक इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, and I hope I delivered the best, I captured the best, and I'm delivering the best now. So if you like the video till here, so do consider to like, comment, share, and also do not forget to subscribe to my channel. So this is your boy Vivek Menon signing off. Bye bye.